Yes, good afternoon, all of you. We are going to discuss the problems or the mistakes which you committed yesterday in the worksheet. Although we have revised all the chapters, but even then you are doing mistakes. It means आपको problems है अभी. You have to tell me where you find it difficult to learn. कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई कीवर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, जहाँ आपको चैप्टर में कोई डाउट है. क्लियर? एंड what you should do when we discuss the answer, after that even then when you commit the mistake, it means you're not sincere, you don't listen properly. So we discussed the answers yesterday. Okay, so now I'm going to ask you, Upmanyu. Yes, beta, name two sources of roughage. Yesterday I've sent the answer key also. वो आंसर की किसके लिए होती है अगर आपने अपने आंसर्स देखने ही नहीं है, या आपने टेस्ट में रॉन्ग लिखा है, फिर हमने डिस्कस किया तो भी नहीं सुना, तो मैंने आंसर की भेजी वो भी नहीं देखी, अब अभी भी नहीं आपको आ रहा है. देखा था फिर तो आ जाना चाहिए. नो, आपका ऑलरेडी ठीक है. जिस बच्चे का रॉन्ग था बट उसने अब करेक्शन कर लिया, उसको आ गया है वैसे. Yes, Manveer, stand up. Two sources of roughage. कोई फायदा है फिर आपको करवाने का, कोई डिस्कशंस करने का, जहाँ फिर कोई आपको आंसर की भेजने का, वो आंसर की तो फिर फोन में ही रहेगी ना. आपको पता चल जाता है कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, मैंने रॉन्ग लिखा है, मैम ने कुछ और बताया है. You should know कि what is the correct answer. तनिष्का, क्या? Loudly. No. Salad and semolina. अब सबको आ जाना चाहिए. Sources of roughage. और you can write दलिया also, उसके भी नंबर मिल जाएंगे. सैलेड में हम लेते हैं या तो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स. सो सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पील में रफेज होता है, सीड्स में भी रफेज होते हैं. क्लियर? सो यू कैन राइट सीड, you can write salad, you can write whole grain wheat, फ्लोर से बनी कोई भी चीज. क्लियर? आटे से बनी, मैदा नहीं, मैदा चपाती जो आटे से बनी है, और जो मैदा होता है जिसमें हम उसकी व्हीट की स्किन रिमूव कर देते हैं, उसमें रफेज नहीं होती. यस, ब्राउन ब्रेड, नॉट वो ब्रेड जो मैदे से बनती है. Online students, you can write if doubt is there in your site. Yes, Himanshu beta, you can unmute yourself. Tell me what's the doubt. Himanshu. Excuse me. Good afternoon, ma'am. जी बेटा बोलिए. Excuse me, ma'am. जैसे कि roughage is not a nutrient, but it is important because it makes our digestive system healthy. It removes the undigested parts of the food. ma'am, I want to say that it is not nutrient, but it is in a balanced diet. Yes, beta, it should be included in our diet because it is very important for us. It makes our digestive system healthy. Although it does not give the nutrients, we cannot digest it. Okay, ma'am. Okay, now mute yourself. Yes, so these are the different sources. And next
which is committed by you, it was that you have to write 2 organs of digestive system. हमने digestive system draw भी किया बहुत टाइम, टेबल भी किया, हमने उसकी रिवीजन भी की. Even then you are writing wrong. और सबसे पहले जो digestive system का हमने टोटल बनाया था, उसमें जो हमने organs लिखे दिया, अगर आपको ये लिखने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट एंड जो आपने सबसे ज्यादा मिस्टेक की है, दैट इज रिलेटेड टू द ड्राइंग ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टीथ. नाउ आई एम आस्किंग यू टू कम. आपने देखा कि हमारे नंबर उसमें कम आएंगे, हमने ठीक से नहीं बनाया. प्रेजेंट दोस्त ने चेक के whether I have drawn correct or not. Only 3-4 students got flowers. Rest either you have written wrong spelling or drawing was not correct. थोड़ा सा ठीक है. That I read very good. थोड़ा सा yes, now look here. कैनाइन में थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा क्लियर. इट इज पॉइंटेड. थोड़े तीखे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू टीयर द फूड. टीयर द फूड. दिस पार्ट इज नाउ Somebody is unmute. premolars are broad. Premolars are broad. Premolars are broad. Premolars are broad. Like this. और molar इसने बहुत ही रॉन्ग बनाया था, इसमें करेक्शन ज्यादा चाहिए. Ma'am, somebody is unmute and making disturbance. Like this. और ये सबसे ज्यादा ब्रॉड होते हैं. Ma'am, Vijay Puri is unmute. ज्यादा ब्रॉड होंगे. Like this. Yes, ये लास्ट पे होते हैं. लास्ट पे जो हमारे 3 this side, 3 this side, total 6 in each jaw and total number is 12. Yes. Yes, now look at this. Which type of teeth is this? Look at all of you. Get the shape of this. Okay, you have to draw like this. The next one is how many canines in each jaw? Total number. Function is clearing the food. Next is premolar. How many premolars? 4 in each jaw. Total number 8. Their function is to crack the food. Molars 6 in each jaw. Total number 12. Total number. What is the function of beta? Function of molars to grind and chew the food. Speak out all of you. So what is the function of molars? They are used to chew the food, or we can say grind the food. Now
The next mistake जो आपने की है, that was in the drawing of photosynthesis. Photosynthesis is the process which is in by which plants prepare their food. And which part is used to prepare the food? तो leaves में कुछ बच्चों ने बनाई नहीं, उन्होंने पूरा टाइम वेस्ट किया टू ड्रॉ द फ्लावर. फ्लावर नहीं फूड बनाता. Food is prepared in the leaves. That's why we call the leaves kitchen of the plant. It is called the kitchen of the plant. Our next query is regarding the insectivorous plants. So insectivorous plants are the plants which eat insects. Why do they eat insects? To get the nutrients. Get the nutrients. This query is regarding the aquatic plants. What do you mean by aquatic plants, Anvesha? Plants which grow in water are called aquatic plants. What do we call them? Yes, now look at this. Sun. Okay. Leaves prepare the food in the presence of sunlight. Leaves prepare the food in the presence of sunlight. The sunlight you will show falling on the leaves. Clear? And leaves का size थोड़ा बड़ा बनाने, इसमें गैस कौन सी बाहर आ रही है? जो गैस absorb हो रही है, that is आपको कार्बन डाइऑक्साइड के स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखे हैं बहुत सारे बच्चों में. Yes, which gas is produced in the process of photosynthesis? And which gas is used? Slow. Carbon dioxide. And water is absorbed by the water का arrow towards the roots. The roots are absorbing water. Otherwise आपका wrong हो जाएगा. Yes, name two raw materials used for photosynthesis. And two products of photosynthesis. Oxygen and food, not carbon dioxide. Carbon dioxide to use हो रही है. Produce means जो चीज बन रही है. Clear? Yes. Water is used. Carbon dioxide is used. So they are raw materials. And now tell me what is chlorophyll? What is chlorophyll? Tanishka? स्टेम के अंदर नहीं. Very good. Green substance present in the leaves. Speak out all of you. Green substance present in the leaves. That is called chlorophyll, and it is very essential to prepare the food. Some plants they do not have chlorophyll. They are called non-green plants, mushrooms. Okay, they are mushrooms. Clear? Yes. Now, Himanshu, you are. Yes, but the next query is regarding the insectivorous plants. They are the plants which eat insects. Okay. Why do they eat insects? Because they grow in the soil which is deficient in minerals. कुछ minerals वहाँ पे नहीं होते. So in order to fulfill the requirement of minerals, nutrients, they start eating insects.
Otherwise, they have chlorophyll and they do the photosynthesis also. Clear? For example, insectivorous plants की picture plant, Venus flytrap. Speak out all of you. Picture plant and Venus flytrap. Trap means पकड़ना. Okay, वो flies को पकड़ता है. That's why name is picture plant and Venus. Yes, ऐसे करके वो shut कर लेता है. Okay, and